Well, this is the time to do some practice for statement of profit or loss. Well, इस statement of profit loss में हम function of expense method को follow कर रहे होंगे. All right. And again, we'll have a trial balance. And from that trial balance, we will identify the items which will be presented in the statement of profit loss. Okay. And then we will end up at a point which is a result of the profit or loss account or statement of profit or loss, which is obviously profit after tax or loss after tax, whatever. Let's see how we prepare statement of profit or loss with the help of a trial balance. Well, since we have to have both sides equal, so this trial balance will be showing assets and liabilities and owner's equity along with the expenses and incomes in the debit and credit sides. Well, here we see non-current asset, current asset, except inventory, okay? Because we have to treat inventory separately. मैंने आपको एक concept बताना है inventory का, इसलिए मैंने यहाँ पर inventory को separately present किया. And mark it that this is the inventory on closing date, okay? On the date when we are preparing the trial balance, okay? ये closing date पे जो inventory हमारी है वो है. Well, cost of sales वर्कआउट की हुई है जिसमें कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कंज्यूम हो गई, ये अमाउंट ऑफ परचेजेस हैं हमारे पास, एंड वो क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस हो रही है जो कि उसका इन्वेंट्री का डेबिट आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है. अब यहाँ पर देखिए, लेट मी एक्सप्लेन इट. दिस इज द डेबिट ऑफ इन्वेंट्री एंड सिंस दिस अमाउंट इज बीइंग subtracted from the purchases, this is credit of the inventory. Okay, so debit inventory आपको एसेट के तौर पर प्रेजेंट करना है और क्रेडिट जो हो रही है इन्वेंट्री वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस करना है. ओके, सो ये 26,650 is the amount of cost of goods sold in which opening inventory has been included and closing inventory has been subtracted from the amount of purchases of 30,000. Okay, well, then we have incurred selling commission, we have paid marketing activities, we have paid for staff salaries, we have paid for, or in a way we have a charge of depreciation. Okay, depreciation charge for the year 2500. Okay, and repair and maintenance expense we have paid for it 1630. This is expense for the year. Interest expenses for the year are 490 and the amount of tax expense is 2760. well, ये हमें कुछ expenses ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे, यू नो वेरी वेल, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर यहाँ तो आपको एसेट्स मिलेंगे, यहाँ आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे, being debit in nature. Well, trial balance की credit side पे you will find owner's equity items. Okay, these are the items of owner's equity, and you will find items of liability here, and obviously you will find item of income, which is only one, that is sales income. All right, so this is trial balance and both sides are equal. You can make total of both sides and you will find both sides are equal in amount. All right, so having this trial balance, now we will prepare a statement of profit or loss for the company, which is Sample Limited. Statement of profit loss for the year 31st December X2. And here we go. Revenue में हम sales income को present करते हैं. You see the amount of sales is 40,000. Okay, well, and then cost of goods sold. We have worked out this cost of goods sold for the sake of ease, and this is how we worked out opening inventory plus purchases minus closing inventory, और closing inventory का effect trial balance में नजर आ रहा. Very well, this is cost of goods sold and the outcome is gross profit. Well,
उसमें अदर इनकम को ऐड करना है। हमारे पास इस ट्रायल बैलेंस में सेल्स इनकम के अलावा कोई अदर इनकम नहीं है, तो अदर इनकम इज 0. Okay, then we have this distribution cost. That distribution cost is our expense. अगर आप इसको देखें distribution cost कैसे बन रही है, selling commission and marketing expense 1000 and 2370 total comes to 3370. well, आप जानते हैं कि यहाँ पर नोट्स के ज़रिए से हम इसको वर्किंग के अंदर शो करेंगे और नोट्स रेफरेंस देंगे। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर नोट रेफरेंस देंगे और उसकी वर्किंग भी आप शीट में करेंगे। फिर आप देखते हैं कि जी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन से हैं। ये सैलरीज एंड वेजेस, डिप्रीसिएशन चार्ज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन तीनों को आप क्लब करते हैं और आपके पास ये तीनों की अमाउंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पे 9930 का टोटल यहाँ पर आपके पास 930 नजर आ गया। फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस विच इज इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस 490 पिक किया, दिस इज 490 इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपने जब ये तमाम एक्सपेंसेस को लेस किया ग्रॉस प्रॉफिट में से तो आपको लॉस होगा। ओके, ये आपका लॉस है बिफोर टैक्स। अब यहां पर एक जानबूझकर मैंने आप लोगों को टैक्स एक्सपेंस का पॉइंट डिस्कस किया है कि लॉस के सिनेरियो में भी टैक्स एक्सपेंस हो सकता है आपको पे करना पड़े, टैक्स एक्सपेंस आपके लिए फॉर द ईयर चार्ज के तौर पर नजर आए। रीजन बीइंग ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, whereas income tax expense is charged on taxable profit, तो टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा जो होगा इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट होगा, उस पे हमारा टैक्स एक्सपेंस है 2760, जिसकी वजह से टोटल लॉस हमारा 3200 का हो गया। तो ये टोटल लॉस जो है ये हमारे पास जब आ गया, इसको अब हम लेकर जाएंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ इन अ वे रिटेन्ड अर्निंग्स में, और वो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगा वो हमारा इस लॉस फॉर द ईयर से रिड्यूस हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये ज़हन में रख लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग का, कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब हम वर्कआउट करते हैं उसमें ये चीज़ तवज्जो में रखें, जैसा कि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने ये बात देखी कि हमारे पास अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने वर्कआउट अभी नहीं की हुई, उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं की हुई, तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को वर्क करना था आपने और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर कैलकुलेट होना थी। वेयरएज इन दिस सिनेरियो क्लोजिंग इन्वेंट्री की अकाउंटिंग एंट्री पास हो चुकी थी एंड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस एज एन एसेट, और इसीलिए उसका क्रेडिट आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नजर आ रहा था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फाइनल फिगर जो है हमने सेल्स रेवेन्यू में से माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू।